I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today on the 12th of December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills. After these are introduced, considered and passed by Lok Sabha. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Second Sanhita 2023, the Bharatiya Sakshya Second Bill 2023, all these three will be taken together and allocation of time is 15 hours. The Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023, 2 hours. The Government of Union Territories Amendment Bill 2023, 2 hours. The National Capital Territory of Delhi Laws, Special Provisions Second Amendment Bill 2023, 3 hours. Shri Arjun Ram Meghwal to move a motion for consideration of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service, and term of office bill 2023. Honorable Chairman, sir, I move that the bill to regulate the appointment, condition of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto be taken into consideration. Motion moved. There are two amendments by Dr. John Britas and Dr. V. Sivadasan for reference of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service, and term of office, Bill 2023, to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without speech. Sir, I do move the amendment to send the bill to a select committee. Sir, the select committee. This bill sent to select committee. Motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Randeep Singh Surjewala, 21 minutes. सभापति महोदय, 4 अक्षर हमारे संविधान में हैं। One second. If you permit. You want to make initial comments? हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना सर। ठीक है। As chairman, I tell everyone you have the freedom to speak in a language of your choice. One member has no jurisdiction to direct another member to speak in a particular language. Our commitment to a particular language may be too deep-rooted. So, Randeep ji, let the Honorable Minister make some observations. चेयरमैन सर, 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में इसी सदन में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 91 के एक्ट को रिप्लेस करके 91 का जो एक्ट था उसमें बाकी चीजें तो सब ठीक थी, लेकिन अपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं था, अपॉइंटमेंट वाला क्लॉज उसमें नहीं था। और आपको जैसे जानकारी है कि 2 मार्च 2023 को
सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को सुनते समय एक फैसला दिया, until the parliament makes a law in consonance with the article 3242 of the constitution। तो इस फैसले के अनुसरण में सरकार ये बिल लेकर के आई है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया। What did the Supreme Court direct? सुप्रीम कोर्ट until the parliament makes a law, बाकी चीजें मैं बाद में जब चर्चा होगी उसके बाद आऊंगा। नहीं, इसमें देखो एक जो क्रक्स है वो ये है, until the parliament makes a law in consonance with the article। जो संविधान का आर्टिकल 3242 है वो कहता भी इस संबंध में, अपॉइंटमेंट के संबंध में पार्लियामेंट एक्ट बनाए। हमारा एक्ट था नहीं, 91 में एक्ट बना, लेकिन अपॉइंटमेंट उसमें गायब था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, 3-4 ऑब्जर्वेशन थे, और 3242 के तहत हमने ये बिल लेकर के आए हैं। इसमें एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी है, इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट भी है, क्योंकि अब तक तो जो प्रक्रिया थी सरकार तय करती थी नाम और हो जाते थे। अब सर्च कमेटी भी इसकी बनी है, सिलेक्शन कमेटी भी बनी है, इसमें सैलरी का विषय भी आया है, इसमें प्रोटेक्शन भी है। जो अभी हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिल हमने 10 अगस्त को पेश किया था, इसमें सर्च कमेटी में भी एक क्लॉज 6 में अमेंडमेंट है, ऑफिशियल अमेंडमेंट बाद में मैं मूव करूंगा, और एक सैलरी को लेकर के भी एक अमेंडमेंट है क्लॉज 10 में, और एक कंडीशन ऑफ सर्विस, इसमें क्लॉज 15 में एक अमेंडमेंट है, और फिर क्लॉज 15A हमने इंसर्ट किया है, प्रोटेक्शन से संबंधित है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपने ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो उनके खिलाफ ऐसे प्रकरणों में कोई कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्शन से संबंधित है। ये इस तरह के इसमें प्रावधान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इस पर चर्चा करे और उसके बाद जो सुझाव आएंगे उसके आधार में जवाब देने के लिए, जैसे आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जवाब देने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उनकी चर्चा वो बाद में करेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग का आधार प्रजातंत्र की शुचिता है, प्रजातंत्र की निष्पक्षता है। संविधान और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जिसको हम कहते हैं, उसका आधार ही निष्पक्ष चुनाव है, और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग है। 4 शब्द जब भी आप चुनाव आयोग की बात करेंगे, निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वायत्तता और शुचिता, ये 4 शब्द एक काबिल कानूनविद के तौर पर, आप सभापति जी भी हैं पर आप एक काबिल वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी व्यक्ति के जहन में भी 140 करोड़ लोगों के देश में आएगा। ये जो कानून आज माननीय मंत्री जी और सरकार लेकर आई है, ये इन चारों शब्दों को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाला कानून है। मेरा ये विनम्र आग्रह है। और इससे पहले कि मैं बिल के प्रावधानों की चर्चा करूं, सभापति जी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एंड अवॉइडेंस ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये इलेक्शन मशीनरी इन दोनों बातों से प्रेरित होगी। ये हमारे संविधान के संविधान निर्माताओं ने कहा। काश आदरणीय कानून मंत्री जी, मेरी और आपकी और इस देश के लोगों की नहीं, तो जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था और जो संविधान सभा में चर्चा हुई थी, अगर एक नजर उस पर डाल लेते तो शायद ये इस कानून को अभी वापस ले लेते या बनाते ही, लेकर ही नहीं आते। सभापति जी, बाबा साहब ने क्या कहा था इलेक्टोरल मशीनरी के बारे में, मैं उसके कुछ शब्द आपकी अनुमति से यहां पढ़कर बताना चाहूंगा। 15 जून 1949 को संविधान सभा के अंदर
इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल मशीनरी, चुनाव आयोग, प्रजातंत्र की शुचिता और स्वायत्तता, उस पर चर्चा हुई। दो और सदस्यों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पर बाबा साहब ने क्या कहा मैं वो पढ़कर बताना चाहूंगा। एंड आई कोट, in a very early stage in the proceedings of the Constituent Assembly, a committee was appointed to deal with what are called fundamental rights. This is what Baba Sahib is saying. That committee made a report that it should be recognized that the independence of the elections and the avoidance of any interference by the executive in the elections to the legislature should be regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing with fundamental rights. When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing with fundamental rights. But the House affirmed, without any kind of dissent, that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be freed from any kind of interference from the executive of the day. This is what Baba Sahib said. And I quote Baba Sahib Ambedkar further, sir. Therefore, so far as the fundamental question is concerned, that the election machinery should be outside the control of the executive government, there has been no dispute. What Article 289, which today is commensurate to 324, what Article 289 does is to carry out that part of the decision of the Constituent Assembly. It transfers the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls and of all elections to Parliament and the legislatures of the states to a body outside the executive. That's what Baba Sahib says, to be called the Election Commission. And sir, not only Baba Sahib Ambedkar, he was reacting to what two other members were saying, and I like to quote two lines from what was said by two members of the Constituent Assembly. One was Professor Shibban Lal Saxena, and I quote him, sir. It is quite possible that some party in power who wants to win next elections may appoint a staunch party man as chief commissioner. Unquote. I also quote, sir, Pandit Hridaynath Kunzuru. Quote, we are going in for democracy based on adult franchise. It is necessary, therefore, that every possible step should be taken to ensure the fair working of the electoral machinery. If the electoral machinery is defective or is not efficient or is worked by people whose integrity cannot be dependent upon, the democracy will be poisoned at the source, nay people. Instead of learning from elections how they should exercise their vote, how by judicious use of their vote they can bring about changes in the constitutions and reforms in the administration, will learn only how parties based on intrigues can be formed and what unfair methods they can adopt to secure what they want. In this context, Baba Sahib said that electoral machinery has to be necessarily independent and it has to be necessarily outside the interference of the executive. These were two fundamentals that the Constituent Assembly was unanimous. Constituent Assembly was also unanimous, sir, that a fair and free election, bereft of the interference of the ruling executive, is a fundamental right, though not included, but the entire spirit of the Constituent Assembly was this. I asked myself, मैं इस माननीय सभापति जी खुद से भी, इस सदन से भी, और हर वो व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है उनसे पूछूं, जो आप लेकर आए हैं वो क्या बाबा साहब
संविधान सभा मत से कहा था, बगैर लाग लपेट, बगैर राजनीतिक द्वेष के, क्या यह उस मापदंड पर खरे उतरता है? तो मुझे यह कहना पड़ेगा, यह उस पर औंधे मुंह गिरता है। Let me now bring your kind attention to the provisions of the bill, as also the fact that Honorable Minister said that there are just some observations of the Supreme Court. सर, अगर आप इस कानून को देखें, इस बिल को देखें जो वो लेकर आए हैं, तो उसकी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और मेरे एक माननीय साथी ने उस पर अमेंडमेंट भी दी है, क्लॉज 7 पर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियां कौन करेगा? माननीय मंत्री जी जो कानून का मसौदा लाए हैं उसके मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे उस समिति के, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो मेंबर होंगे, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको भी प्रधानमंत्री जी चिन्हित करेंगे वो सदस्य होगा। यानी प्रधानमंत्री जी और एक उनके मंत्री जो उनकी मर्जी से चिन्हित किए जाएंगे, उन दो लोगों का बहुमत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर इसके बारे में क्या कहा था, मैं पहले उसकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 मार्च 2023 को लगभग 130 सफ़े के निर्णय में अनूप बरनवाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसकी 8 या 9 लाइन इस सदन में पढ़कर बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा पैरा 9 में, the executive alone being involved, and I quote, the executive alone being involved in the appointment ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. Para 165. The election commissioners, including the chief election commissioner, blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights, must be chosen not by the executive exclusively and particularly without any objective yardstick. So sir, दो बातें कही गई। पहला कि एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं कर सकता। दूसरा, किसी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक के बगैर यह नहीं किया जा सकता। और इसी पैराग्राफ में कोर्ट ने कॉशन भी किया, एन इलेक्शन कमीशन which does not ensure free and fair polls as per the rules of the game guarantees the breakdown of the foundations of the rule of law. यानी रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को खत्म कर देगा एक ऐसा चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से परे नहीं। Equally, the sterling qualities which we have described, which must be possessed by us, by an election commission, is indispensable for an unquestionable adherence to the guarantee of equality in Article 14. लगभग 230 सफ़े का ये जो जजमेंट है, उसमें दो बातें साफ हैं। Number 1, the CEC and the EC, they must be arm's length from the government. Number 2, the process has to be beyond influence or under the diktat of the executive of the day. Exactly what Baba Sahib had said, exactly what the Constituent Assembly had said was reiterated, was reaffirmed by none less than the Supreme Court judgment to which the learned minister is referring to. May I say, sir, that clause 7 militates against, I'm deliberately using that word, I hope it's not unparliamentary, sir, and I'm subject to correction. Surely there could be another word. Yeah, it violates, negates the rigors and the affirmation by the Constituent Assembly, by Baba Sahib Ambedkar, by other individuals and honorable members of the Constituent Assembly. It militates against the very spirit of the Constitution that is enshrined in Article 14.
It, it completely negates and subjugates Election Commission to the authority of the executive, and it does away with, may I respectfully say, it does away with willingly, if I may say maliciously, the judgment of the Supreme Court in toto. And that's why this law is per se like a stillborn child. Thirdly, sir, I also want to point out, sir, जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, आर्टिकल 14 जो हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है और जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के बेलगाम कार्यों पर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा तरीका है, ये पूरा कानून उस आर्टिकल 14 के लेटर और स्पिरिट के विरुद्ध है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा, सर सभापति जी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है वो अब एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड सर, क्योंकि अपॉइंटमेंट कमेटी है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत किए गए उनके एक और मंत्री। तो एक कहावत है गांव की, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, आप भी, कि अंधा बाटे सीरड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। If Prime Minister and his minister is going to be the majority in the committee, why have the committee? Let the Prime Minister appoint everybody. Why even have this law? It's an empty formality. Secondly, sir, Supreme Court said, Constituent Assembly said, the first law minister of the country, Baba Sahib Ambedkar, said that ruling regimes to nominees make the entire process ineffective and negatory and redundant. And this is what the Supreme Court also said. I want to quote from those 4 lines in para 8 of that judgment, and I quote, sir, like the judiciary. In fact, वो एक कदम आगे गए और उन्होंने कहा चुनाव आयोग में और न्यायपालिका में कोई अंतर नहीं. And I quote, sir, para 8, like the judiciary, the Election Commission must display fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, that is institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. Sir, this is what the Supreme Court said. This is what the framers of the Constitution said. This is what this government is afraid of. I'm saying it with a sense of responsibility, for they don't want an independent election commission and CEC and EC. They want a pocket borough. उन्हें एक जेबी चुनाव आयोग की आवश्यकता है. ये कानून एक जेबी चुनाव आयोग का गठन करेगा. आप जेब से चुनाव आयोग निकालेंगे और जो आप चाहेंगे फिर वो प्रजातंत्र के साथ वो करेगा. इस कानून का फाइनल मतलब यही है सर. यू पिक और चूज का एक फॉर्मूला होगा. सर, may I respectfully also say, sir, that it does not pass any kind of constitutional muster. We have to be aware, this is an august house. After all, we have to be aware as to what we are doing and saying and what we are passing. This is manifestly arbitrary. These are ill-conceived attempts. This law is an ill-conceived attempt at consolidating undue executive control, total executive control over the electoral body, that is the Election Commission. It also, the process is arbitrary, the intent is malicious, and the result is disastrous, if I may say. That is what is going to happen, sir. And, sir, I again take the liberty of last time quoting the Supreme Court, where they said in para 119. Before that, let me remind the honorable member, Yes, sir. with highest respect to everyone, the parliament is the sole repository of lawmaking. And this is wisdom of the parliament. Neither the executive, nor the judiciary,
nor any other body. My time may be stopped. No, I'm aware of that. Since majorly you are focused on Supreme Court judgment, as if the reflections therein have to bind us. I would expect the debate to rise to a very high level because, one second, because this house, this parliament, to the exclusion of any other entity, be it executive or judiciary, is supreme when it comes to lawmaking, and you are part of it. Extra 30 seconds. Thank you. Go ahead. कल तो और कुछ और बोले सर कल तो और कुछ बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट You both are. परसों और कुछ बोल रहे थे I'm really surprised. कोई बात. I am really surprised, both of you. Sir, It is time we rise to some level at least. सर कल आप ही बोले थे सभापति महोदय, You represent a party that has a great history. सर आप ही कल बोले क्या बोले? Let the honorable member rise and indicate what I spoke. Please rise. Take your seat. Indicate what I spoke. What did I say? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में आपने बोला जब कोई कोर्ट कर रहा था Would you be good enough to quote me? सर Do it during course of the सर day. आई एम डूइंग सर यू अलो मी, यू आर नॉट अलोइंग मी. Mr. Nasir Hussain, during course of the day, go to the proceedings of the house yesterday and put it on the table that you rely on that. It is not a good habit. I am only making a plea to the members that we are parliament of 1/6 of humanity. We are supreme when it comes to lawmaking. We cannot suffer intervention from any other organ, be it executive or judiciary. That's what I'm saying. Honorable member may continue. One second. Please take your seat. If there is a number, if your time comes, take your seat. Yes. सभापति जी, let me begin by thanking you for your words of wisdom. You are much seasoned, both in age and experience, both in law as also perhaps in parliamentary practices. You have held many offices. But with all humility may I say, sir, you are 100% right that Parliament is the august body and is the overarching body. It is the fountainhead of democracy. But even the fountainhead of democracy, sir, will have its sanctity when it does not commit arbitrary acts and passes arbitrary law. The fountainhead of democracy must adhere to the very tenets of democracy out of which it is born. There is a power higher than us, and that is democracy itself and the constitution itself. We may not be the interpreters of constitution, we are framers of law. It is the Constituent Assembly and the Parliament which continues to amend that constitution which enacted by the Constituent Assembly. But there is something called a higher spirit of democracy and an accountability to the constitutional norms. So as I stand today here, sir, and as I say what I say to my esteemed minister, who is very experienced, and I place before you with you all your wisdom and experience, I must say I'm conscious, I'm duty bound, and I'm answerable to that highest spirit of democracy and the constitution which was enacted by this very parliament. And that spirit of the constitution and that spirit of democracy today tells me, sir, that a law is being brought which will tarnish, bulldoze, and sabotage that very democracy and undermine the very constitutional practice that you and me and each one of us swear by. And that is my anguish today, which I seek to place through you before this august house and also place before the honorable minister. Supreme Court only interprets the constitution. They are also defender and protector of the constitution. Many times we have said that. And and I did not quote the Supreme Court in the beginning, may I remind you, sir. I'm only responding to what the honorable chair said to me. I began by
the words of and the wisdom of Baba Sahib Ambedkar. I began by the wisdom of Constituent Assembly. And this was the only issue. Independence of Election Commission, lack of interference from the political executive, and an electoral machinery which is only and only answerable to the tenets of democracy and fairness and equity was all that the Constituent Assembly was saying. We have seen, we have read through, sir, you've read through, I've read through many times the debates of the Constituent Assembly on many, many facets. Rarely I've found, rarely I may say, and please correct me because you've read perhaps Constituent Assembly debates far more times than I have, but I have also. Rarely I've found that not a single member of the Constituent Assembly disagreed that the fountainhead of democracy is fairness of the electoral process and independence of the election machinery. This was the only issue where the entire election, Constituent Assembly, irrespective of caste, color, creed, religion, political differences, ideological differentiation, they were unanimous. And that's all that I pointed out to the Honorable Minister. That's why, sir, I did not begin with the judgment of the Supreme Court. And I said, Supreme Court has only affirmed what was said by the Constituent Assembly. May I, sir, also point out? Conclude, please conclude. Yes, sir. I also want to point out that the law and what the Honorable Minister has brought, he negates and ignores not one, not two, but the three committees on the subject, two of which were appointed by your government. And may I just quote, sir? There was the Dinesh Goswami Committee on Electoral Reforms. Perhaps the chair was also a minister at that time in that government, sir. You were a minister. And that government was supported by the Bharatiya Janata Party, sir. Then. It said, and I quote It the was report. supported by nearly the entire house except your party. Yes, sir. And what did that report say? So I am only saying, कम से कम जो खुद कहा है भैया उसको तो मान लीजिए. हाथ जोड़कर इतना ही कह रहा हूं, हमारी ना मानिए. Para 1.2 on page 9 of the report says, for CEC appointed by the President in consultation with the Chief Justice, Leader of Opposition of Lok Sabha, and of course the largest leader of the largest opposition group. For EC, Chief Justice, Leader of Opposition, and the CEC. This was the recommendation made, ignored by the Honorable Minister. Again, their own Law Commission report number 255 on electoral reforms 2015, headed by Justice A.P. Shah. May I remind the Minister? What did that report say? Para 6 point, I'll just take, sir, 3 minutes by the watch. You are eating into the time of your party only. Okay. Go ahead. I don't think so. My party has an objection, sir. Go ahead. And I'm sure the chair has none either. The total time allocation to your party is 41 minutes. Yes, You sir. have taken 24. Yes. Can continue up to 41 if they agree. Okay, sir. Para 6.12.5, sir, of the Law Commission report number 255 of 2015, headed by Justice A.P. Shah. I want to remind the Minister, and I quote, the appointment of all the election commissioners, including the CEC, should be made by the President in consultation with a 3-member collegium or selection committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Lok Sabha or the Leader of the largest opposition party in Lok Sabha, and the Chief Justice of India. जब वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट मानने की बारी आई मंत्री जी, तो आप इस दोनों बातों को खा गए. जो आपके लॉ कमीशन की रिपोर्ट है और आपके use some other word. खा गए नहीं को. आप उसको ओमिट कर गए, सर. ओके सर, आई स्टैंड करेक्टेड, सर. Because he has unimpeachable credentials. Very well, sir. I concede. Sir, my next short point is, अगर आप क्लॉज 5 ऑफ द बिल को भी ध्यान से देखें तो एक बड़ी यूनिक बात है. पहली बार यह निर्णय कर दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अब हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं हो सकता except one category. There is complete reservation now on
who can be CEC and EC. Either a serving secretary government of India or a retired secretary government. मतलब कंप्लीट 100% रिजर्वेशन फॉरएवर आपने कर दी. मैं केवल माननीय मंत्री जी से खुद से भी ये पूछता हूं, सर, इफ यू वर नॉट द स्पीकर, कुड यू नॉट एज ए जूरिस्ट बी ए सीईसी और ईसी? आई बिलीव एक ऐसा व्यक्ति, और मैं ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं कह रहा, पर ब्यूरोक्रेट ने तो कभी ना सरपंच का चुनाव लड़ा, ना पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, ना जिला परिषद का चुनाव लड़ा, ना एमएलए का चुनाव लड़ा, ना एमपी का चुनाव लड़ा, ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा. तो इलेक्शन की लिस्ट और इलेक्शन की मैनेजमेंट वो करेंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा. ये 100% आपने उनके लिए रिजर्व कर दी. क्या इस पर आप पुनर्विचार करेंगे? एक शॉर्ट पॉइंट ये था सर. एक शॉर्ट पॉइंट और मैं आई वांट टू मेक. जो एक सर्च कमेटी है जिसके माननीय मंत्री जी अब अमेंडमेंट भी ले आए हैं क्लॉज 6 में, ये सर्च कमेटी जो है ये बड़ी यूनिक है सर, और हिंदुस्तान में जितने और ऐसे कानून हैं उनके बिल्कुल अलग है. अगर आप इस पे देखें, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड थे, माननीय मंत्री जी खुद इसके हेड बन गए. सो इट इज नाउ हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर. वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट द सर्च कमिटी इज नाउ एक्चुअली ए स्टीयरिंग कमिटी. This steering committee will now eliminate candidates. Say, sir, I also apply as a former secretary, hypothetically I'm saying, or a serving secretary. They can eliminate any number of inconvenient people that they want. They will only select 5 people. For CVC, for CBI directors, it is not so. The search committee puts up all the names. पर यहां तो ये steering committee है, और वो एक कहावत है गांव की कि घर की भाई काका लिखड़ियां, राजस्थान हरियाणा में कहते हैं. तो सर्च कमेटी कानून मंत्री है, और इलेक्शन कमेटी प्रधानमंत्री है, और उसके नॉमिनी उनके मंत्री हैं. तो घर की भाई काका लिखड़ियां, अपनी मर्जी है जो करेंगे. सर, it cannot be steering committee that they have to restrict it to 5 people only. Why not place everybody? I don't know why they want to do so. One more thing, sir. Clause 17 of this bill runs contrary to Article 324(3). If you see Article 324(3), the CEC, the Chief Election Commissioner, is the chairperson of the commission. The Constitution framers categorically recognize. So may I just read? It's only 2 lines. Go ahead. When any other election commissioner is so appointed, the Chief Election Commissioner shall act as chairman of the election commission. सर, वो चीफ जस्टिस हों, वो प्राइम मिनिस्टर हों, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, उन्हें इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करना है. पर अब आपने बोल दिया कि कोई निर्णय हो, क्वासी जुडिशियल फंक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो, डेली फंक्शंस हो, वो मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे. यानी कल को सभापति जी, हाइपोथेटिकली मंत्री जी अगर सीसी हैं और मुझे इनको नेगेट करना है, तो मैं 3 और मेंबर्स अपॉइंट कर दूंगा, और फिर कहूंगा कि आप दफ्तर में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, या आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, या आप किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के मेंबर ही नहीं बन सकते जब सिंबल का निर्णय मेरे पास आएगा. आई फाइंड दिस स्ट्रेंज. The procedure and conduct is always done. If I was to say I'm going to regulate procedure of this house, you will say no. Even deputy speaker can't do it. I am the chairperson. Deputy chairperson cannot do it. So chairperson inherently has powers to regulate, but this bill does not say so. In the end, sir, I only want to say to the honorable minister through your good offices, sir, there is an old saying of law, and I want to reiterate it today. Mantri ji, however high you may be, however powerful your government may be, whatever may be the brute majority you may enjoy, the democracy and the constitution is above you, and you cannot subjugate, bulldoze and trample over it. I also want to say, we, whatever may be our numbers as joint opposition of the India Alliance, we are defenders of Constitution of India. We are defenders of people of India. We are champions of the voice of the voiceless, and we will continue to do so. एक समय था सर जब ईसी, जो ये वर्ड है ना ईसी,
इसका मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी। दुर्भाग्य से अब आपने इसको बनाने का निर्णय किया है ईसी, इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। सर, डोंट डू दैट। आपको इस देश में जेबी चुनाव आयोग नहीं चलेगा। जेबी चुनाव आयोग अगर आप इस कानून के माध्यम से बनाएंगे तो इस संसद, प्रजातंत्र और संविधान तीनों की शुचिता, निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वायत्तता, आप उन सब का हनन करेंगे। थैंक यू सर। So, in the course of my colleague's speech, when he referred to the government that prevailed in 1990, you, in good spirit and good wit and good humor, you said that was a government supported by all parties except your party. Sir. I correct myself. Yes, sir. Your Because I want party to did remind not you, support us. I want to remind you that your party also became your party 3 years later. No. I told this house, I have been a member of this party, have good connections there. They need to reciprocate. I have been this side also, and I have been in NCP also. But Jairam Ramesh will not change himself. He knows I made this statement earlier. All I need to indicate to the House that when he said we'll defend, in togetherness, this parliament is the ultimate defender of Constitution, ultimate architect of Constitution, and if anyone seeks to change the architecture of this Constitution, the parliament is custodian of it. No incursion whatsoever can emanate from any other source except this parliament. And that is why we are debating it. What shape the law will take will be determined by parliament. Executive has come with a bill. That's the ultimate authority. Shri Ghanshyam Tiwari. माननीय Tiwari ji, जी your 15 minutes. साहब एक 21 तो करो ये तो अपनी जजमान पार्टी को कहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारंभ करूं उसके पहले कहना चाहूंगा कि मेरे सामने एक समस्या आ गई। जैसे उन्होंने गांव की 2 कहावतें बताई थी। हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। One second. घनश्याम तिवारी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवारी जी। हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है। तो सभापति महोदय, प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय, तिवारी जी, पर इस बात का ध्यान रखिए, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सभापति महोदय, मैं जब माननीय सुरजेवाला जी बोल रहे थे और उनके मुंह से लोकतंत्र की और चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा रस आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि एक बार नवीन चावला जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनको ही चुनाव आयुक्त बना दिया था और वो आज ये कह रहे हैं कि सरकार नियुक्त करने जा रही है। तो साहब इतना ये बात कर रहे हैं, फिर वो पार्टी लोकतंत्र की बात करे जो इमरजेंसी लगाई, सारा काम किया, तो मैं वो लोकतंत्र की बात नहीं करूंगा, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बिल की ओर जा रहा हूं और माननीय सभापति महोदय,
मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने दो बातों की चर्चा की, उन्होंने संविधान सभा की चर्चा की, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा की। पहले तो मैं संविधान सभा के बारे में बताना चाहूंगा कि संविधान सभा ने ईसीआई की नियुक्ति व्यवस्था को संसद के विवेक पर छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव का सारा सिस्टम वो कार्यपालिका के हाथ में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद इसके लिए कानून बनाए। अरे संसद के विवेक पर है, इसलिए मैं आपकी उस बात की तायद करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो कहा कि संसद ही सर्वोपरि है, न तो कोई न्यायालय न कोई और, इसलिए सर्वोपरि संसद के रूप में ये कानून लेकर हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल लेकर आए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। अब वो पुराने, वो हमारे पूज्य हैं और फाउंडर मेंबर हैं, और अब उनके बाद में साहब अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कानून मंत्री बना है तो वो अर्जुन राम मेघवाल है। तो साहब अब जब आप उनकी चर्चा करते हैं तो अर्जुन राम जी मेघवाल की भी चर्चा करो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधेयक है उसका कारण क्या है। साहब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदत पड़ गई है विपक्ष की, और इसके कारण से जिस सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय कर रहे थे, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार की हर बात को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न वो कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये कानून बनाने की आवश्यकता के ऊपर, जब बरनाला अजीत के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की समिति बना दी कि भारत का प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये मिलकर तय करेंगे जब तक कानून नहीं बन जाता। तो उस परिप्रेक्ष्य में कानून बनाने के लिए ये कानून लेकर हमारे विधि मंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं विधि मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून में क्या है सभापति महोदय, इस कानून में चयन समिति की संरचना की व्यवस्था की गई कि चयन समिति कैसी होगी, उसकी संरचना की व्यवस्था की गई है। चुनाव समिति में, चयन समिति में कौन लोग शामिल होंगे इस बात की व्याख्या की गई है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री रहेंगे, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और साहब इसमें और भी इनके लिए बहुत रियायत दी गई है। आगे चलकर इसमें कहा गया है कि विपक्ष के नेता, जितनी विपक्ष का मान्यता प्राप्त दल नेता नहीं हो संख्या, तो उससे भी कम संख्या हो और सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो, उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इतना कंसेशन दे दिया क्योंकि हमें पता है कि परमानेंट रूप से वो कभी भी इस बात पर नहीं आएंगे कि उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष की भूमिका रहे। इसलिए सरकार ने सारी देयता से ये प्रावधान कर दिया कि वो संख्या न भी हो तो भी इनका प्रतिनिधि चयन में रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हो। माननीय सभापति महोदय, 70 साल तक जो आदमी इस बात को कभी चयन समिति की बात ही नहीं की, अपनी इच्छा उसको बनाते रहे, वो आज इस प्रकार की बात करें, मैं समझ में नहीं आता। ये चुनाव आयोग क्या है, ये लोगों के ध्यान में कब आया? मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, जब सबसे पहले TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तब लोगों को पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। वरना तो पहले तो राज्य चुनाव आयोग था। अभी चर्चा कर रही थी कि ये जो सदस्य बनेंगे उनका ये कैडर होगा, ये इनका ये कैडर होगा। शक्ति सिंह जी सुने 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 आपको एक राय दे रहा हूं राय दे रहा हूं। मैं विधानसभा में एक सेकंड, मैं विधानसभा में माननीय घनश्याम तिवारी जी के खिलाफ रहा हूं। मैं प्रतिपक्ष में था, माननीय घनश्याम तिवारी जी मंत्री भी थे। इनको जितना टोकोगे उतनी ऊर्जा आएगी इनको, ये मत कीजिए, ये मेरी आपको राय है। और नीरज डांगी जी के पिताजी भी हमारे साथ थे।
मैं आपको राय दे रहा हूं घनश्याम जी, अब आपको इंटरप्शन नहीं होगा तो आप समय में अपने बात कह पाएंगे। डांगी साहब तो मेरे पड़ोस में रहते हैं साहब, जयपुर में मेरे पड़ोस में ही रहते हैं डांगी साहब। और मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो जिन लोगों का कैडर बनाया है, जो चुनाव आयुक्त बनेंगे या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, इनमें से कभी कोई पंचायत का चुनाव लड़ा हुआ आदमी नहीं होगा। ये माननीय सुरजेवाला ने कहा। माननीय सुरजेवाला जी, जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो कब चुनाव लड़ा हुआ होता है? विधानसभा का चुनाव का अधिकारी एसडीएम होता है, वो चुनाव कब लड़ा हुआ होता है? एक भी आदमी चुनाव लड़ा हुआ नहीं होता, और चुनाव लड़े हुए आदमी को बनाते तो फिर चुनाव आयोग ही नहीं होता। इसलिए सबसे बढ़िया व्यवस्था ये की गई है। आज ये बात आप जब करते हैं उस समय कुछ बात करनी चाहिए थी, वो तो नहीं की। मुख्य बात जो आपको करनी थी वो ये करनी थी कि भारतीय लोकतंत्र में और इसमें समस्या क्या है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रजातांत्रिक पारिवारिक सामंतवाद। गोस्वामी समिति की सिफारिश करी, उसकी बात करी, उस पर बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भारतीय लोकतंत्र के सामने है पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवाद। और वो जो कह रहे थे कि ये ईडी का नाम नहीं लेते, इंडिया जो बोल रहे थे, ये इंडिया इसके खिलाफ खड़ा होगा। ये इंडिया पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भी, मैं आज बताना चाहता हूं यहां पर 7 लोग एक परिवार के मेंबर और मंत्री हैं, वो है प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा। उस लोकतंत्र की बात नहीं करते। चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है सभापति महोदय, ये निष्पक्षता के लिए की गई और केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डायरेक्शन है, लेकिन एक व्यवस्था करनी थी कि 1991 के कानून में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 324 के अंतर्गत और 191 कानून की व्यवस्था के नहीं होने के कारण से ये एक व्यवस्था की गई। और ये व्यवस्था उन व्यवस्थाओं से बेहतर है जो व्यवस्था आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियां कैसे होती है, उनसे बेहतर स्थिति की इसमें व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति आयोग, उससे बेहतर समिति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उससे बढ़िया व्यवस्था की गई है। और अन्य निकायों में जो नियुक्तियां होती है, उससे भी बढ़िया और व्यापक व्यवस्था की गई है कि उनमें तो प्रतिपक्ष का नेता होता ही नहीं है। तो वो सारे जब संवैधानिक रूप से ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो फिर ये नियुक्तियां और ये आयोग ठीक ढंग से काम क्यों नहीं करेगा? माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की 2 चीजों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पहला है भारत का चुनाव। भारत के जैसा चुनाव विश्व के किसी देश में नहीं है, विश्व के किसी देश में नहीं है। आज आचार संहिता लगने से पहले जो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ थे, जिस दिन आचार संहिता लगती है वे चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं और चुनाव आयोग का अधीन होकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उसी हम का भी चुनाव करते हैं, हमको शपथ भी दिलाते हैं। माननीय तिवारी जी प्लीज इधर बोलो। मैं आपसे ही कर रहा हूँ साहब। जी जी, आपस में बात ना करें। आपस में नहीं करे साहब जी। तो मैं ये बात कर रहा था। दूसरी बात कर रहा था कि जब मैंने कहा था कि टीएन शेषन साहब से आने से पहले, मैं भुक्तभोगी हूं सर। मैं 1972 से इन चुनावों से जुड़ा हुआ हूं, स्वतंत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, लड़ा रहा हूं और अब तक यहां पर पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जब चुनाव होते थे तो सरकार की चलती थी, तब चुनाव के पहले दिन तक ट्रांसफर के लेटर कांग्रेस के नेता लेकर आते थे। वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, वोट दो, ये ट्रांसफर का लेटर लो, तब तक काम करते थे।
ये तो आचार संहिता क्या होती है तब पता लगा। और जब टीएनसीएस ने इतना काम किया तो उन्होंने देखा ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो उसकी संख्या बढ़ा दी, 2 कर दिए, अब 3 हो गए हैं, तो जजमेंट के आधार पर निर्णय होगा। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस बात। अभी गोस्वामी समिति की सिफारिश की बात की, प्रकाश वीर समिति की सिफारिश भी आई हुई थी, उन चुनाव सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया। अगर किया गया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 1951 में उन्होंने कानून बनाया और खुद नियुक्तियां कर देते, तो कमेटी भी नहीं थी, तब तो सर्च भी नहीं था, तब तो रिसर्च भी नहीं था, ये बना देते थे, ये कर लेते थे। लेकिन अब जब ये कमेटियां बनने लगी और जब विपक्ष में बैठे और जब इसका थोड़ा टेस्ट आने लगा, तब इनके दिमाग में इस प्रकार की तकलीफ हो गई। इसलिए इस प्रकार का काम ये बार बार करते हैं। अगर आपको चुनाव सुधार करना है तो चुनाव में धन का जो प्रयोग है उस धन के प्रयोग को कम करना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा झा जी, प्लीज। अच्छा चलिए। तो चुनाव सुधार के लिए पैसे का, अब पैसा कहां से आएगा साहब? पैसा आता है चुनाव में ब्लैक मनी का, और ब्लैक मनी जब पकड़ी जाती है तो समस्या होती है। तो कहीं 58 करोड़ पकड़े जाते हैं बंगाल में, तो कभी 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की कि आज तक जितना पैसा नहीं पकड़ा गया उतना करोड़ों रुपए का पैसा इस चुनाव के आचार संहिता के काल में पकड़ा गया। ये इतनी शुद्धता, इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता हमने इस चुनाव की कायम की, तो एक तो मैं करना चाहता हूं। दूसरा, सभापति महोदय, हमारी तरफ से आप बता दें कि पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, जब तक सुधार लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, अटल जी से लेकर, आडवाणी जी से लेकर, मुरली मनोहर से लेकर, वेंकैया जी से लेकर, अमित शाह जी से लेकर, हिंदुस्तान के सारे प्रांतों से लोग आए। प्लीज आप बैठ जाए प्लीज। हाँ बोले। और राजनाथ सिंह जी से लेकर सारे प्रांतों के लोग आए, और एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंच गया। लेकिन उधर जो पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियां हैं, उनकी क्या हालत है साहब? कोई बन भी जाए तो चलता उनके कहने से है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये टिकट वितरण की व्यवस्था परिवारवादी को के हाथ में रहेगी, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव की व्यवस्था को और ठीक करने के लिए पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को, मंत्री महोदय, पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को सुधारने की बात भी होनी चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय के इस मत से पूर्ण सहमत हूं कि कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः संसद का है। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती, वो निर्देश कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है वो ही कानून में आए, ये जरूरी नहीं है। कानून को हम लोकतंत्र की भावनाओं के अनुसार और जनोपयोगी बनाने का काम इस संसद को करना है, और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में 4 बातें प्रमुख रूप से हैं। पहला, आप प्रक्रिया पार्टी ने जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। आप बोले अपनी पार्टी का समय लेंगे। नहीं, मैं समाप्ति कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। तो मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि वो दल जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, वो दल जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने अपने सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, उनके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है, और देश के लोकतंत्र को भी पवित्र रखने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी. Now, Honorable Shri Jawahar Sarkar ji, 18 minutes. Sir, I thank you for this opportunity. I thank my fellow members for giving me this opportunity. I thank my party, my chairman of my party, the National General Secretary for giving me this opportunity. This opportunity is not the discussion of one more bill. Please try to understand that today we are dealing rather innocuously on the amendment of a bill which actually seeks to touch, to shake the very foundations of our democracy. Our democracy rests on free and fair elections. And today we are discussing the key, the structure and the mechanics of that election under the guise of a simple law. Now, why do we need to bother about Indian elections? Why do we need? Just a few examples, sir, just a few statistics. We claim to be the mother of democracy. Maybe we can expand on this some other time, but we have the largest electorate in the world, 92 crores at the last count. We have the largest democracy, functioning democracy. We have 4 million EVMs. The management of 4 million EVMs crisscrossing the country calls for supreme efforts. Sir, I have had the honor of conducting the 1998 and 1999 parliament elections as the chief electoral officer. I know the extreme difficulties under which officers function. The same officer, the same personnel who may be slovenly in his daily work rises to new heights because a surge of national duty overtakes them. It is time to salute their efforts. It's not a question of whether they went through an election process or not. Sir, for a simple election, for a national election, we have 20 lakh policemen drafted from here and there and posted outside their houses. We have 3 lakh paramilitary. I'm just mentioning the statistics. I had 78,000 polling stations, and I know what it was. We must salute the machinery that was created by the first founder, Sukumar Sen, who was drafted from Chief Secretary West Bengal to become the first election commissioner, and he laid down the path so that India's democracy may continue uninterrupted. Now, having said that, I would recommend to both friends on both sides that they read some of the information with pride, the amount of elections we have gone through, the amount of troubles. I remember, sir, in 1999 elections of Atal Bihari Ji, there were floods in Bengal, and my chief election commissioner asked me, "Tum kar paoge?" I said, "Sir, flood with the ye to Bengal mein to hote hi rehte." We held elections on boats. On boats. That's all. People went and voted. We have to go through this. Now, coming to the new bill, and why we stand to oppose. First thing that we need to note in the new bill is the status of the CEC and EC is being deliberately lowered from that of a judge to that of a cabinet secretary. तो इसमें क्या असर है मैं बता रहा हूं इसमें क्या है it is level 17 now under the order of preference a Supreme Court judge is at number 9 of the warrant of precedence. An election commissioner was also there. Now it has been relegated to 9A. Choti baat lagti hai. But sir, on it depends the parity, on it depends the level at which one can call the other. If the cabinet secretary is equal to the election commissioner, tomorrow the cabinet secretary will not listen to the election commissioner. He said, "Hum barabar hai." You see, don't put danger through innocuous English words into the act. Who can summon whom? So there is a deliberate demeaning of the position of the chief election commissioner and the election commissioner being done deliberately under guise of a few words. Second thing, appointment really boils down to that of PM and his minister. ये 3-1, 2-1 खेल के क्या फायदा? आप बैठ के फाइल पे ही दे दीजिए ना, जिसको मर्जी. Why are we going through the charade? I would submit, sir,
after 71 years of conducting elections, God and Parliament has given us an opportunity to rethink. This is not the time to say that Navin Chawla was this and B was this, or Sunil with Arora was this. This is not the time to discuss. We have had good and bad on both sides, and Mr. Qureshi's book is of immense importance. Now, why I find this bill so dangerous, let me explain. In clause 6, it is given that a search committee will be conducted by the cabinet secretary. Fair enough. A search committee, take hai, in all good spirit. And then in clause 7, they say, after the search committee has given names, it will be decided by a selection committee consisting of Prime Minister, his own minister, and the leader of the opposition. The results are known. Why go through this? The Supreme Court's order gave a strong hint that the Chief Justice of India is perhaps willing to join a body and bring in a certain degree of legitimacy, sacrosanctity, and fairness. That order, that innuendo has been refused. Now, it doesn't matter who the leader of the opposition is at that point of time. I would submit we have two leaders of opposition. Dono ko de dijiye, at least there'll be some amount of intelligent discourse before he can run through. The more dangerous clause, sir, is clause 8. Clause 8 actually says, after all this selection and search committee and all that, says that any person can be appointed as Chief Election Commissioner and Election Commissioner. Now, what a dangerous precedent you are opening. This is a job where I have mentioned some of the dimensions, where I've said we have 10 lakh polling stations. It's an administrative job. And we know what administration is in this. And I've also mentioned the degree of fairness that overcomes. Even Tiwari ji, I think, also mentioned about it. Ki jab wo kartavya aa jate na, tab things become different. We are not clerks and officers at that point of time. Now, having said that, we would insist that you choose the best. Now, there is a subclause here saying that with who can be shortlisted? Secretary to the Government of India, somebody who has held the post. I would submit, sir, Secretary to the Government of India is determined by pay scale. Seedhi baat. And tomorrow, a chairman of a cooperative society who has been given that scale and who has conducted elections would fit into the bill. Are you going to bring in someone? Do you think that a huge machinery in every village, in every tehsil, in every block, in every subdivision, in every taluk, in every district of India would be able to run the elections? You are leaving gaping holes. You are leaving gaping holes, and I would submit it is being done deliberately. Now, again, I repeat, in clause 10, the downgrading of the rank takes place. This downgrading is not a question of what shoulder ranks we have, and that's for armed forces. This downgrading is on the power to inganai hai. That power is getting diluted by diluting the rank, and this is extremely dangerous. I would submit, sir, that clause 8 or article 8 is very, very dangerous. I'll read out to you. The selection committee of the Prime Minister may also consider any other person. Please, let. Sir, He's not yielding. Modi ji, later, you are eating into my time. Let. Yes, please. Up, please. Okay, so if you have brought now, taking it in clause 10, I have mentioned clause 10, and I shall wait for the amendment to see what comes up. Now, coming to the Constitution, this is a thing that reflects on Article 324 of the Constitution, which gives, after all the debate that has been held, the power of conducting the elections upon this election commission. And it also makes a subtle difference. And this is where I plead to my fellow legislators to have a look at this. It makes a difference between the CEC and the EC.
where the removal is concerned. In other words, an EC can be removed, election commissioner can be removed practically at will without protection. Now you may say, ये theoretical बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ क्यों theoretical बात कर रहा हूँ. This is practical. Do you remember the episode of Ashok Chawla? When Sunil Arora was Chief Election Commissioner and was issuing orders that Ashok Chawla as member refused or had doubts. Sorry, Ashok Lavasa, my mistake. Ashok Lavasa was issuing order that was going in for conscientious objections. We all know about it. The going on within the Election Commission is secret, and that is what it should be. But we know from certain acts that Ashok Lavasa was not on the same page with the CEC at that time, and the CEC at that time has set new standards that Naveen Chawla never raised, could never set. That CEC, we have enough material to talk about it. Now, what happened is the removal here is equated to Supreme Court judge. That is impeachment, which is very difficult. But the ECs remain unprotected. And I thought that this government would have the largeness of heart and the depth of vision to include this protection to them, because an election commission means three persons, not only one who is in the better books of the government. When Ashok Lavasa raised these conscientious questions, he was promoted. He was kicked upstairs, if I may use the word. He was just removed. His family was raided. His son was raided. His wife was called in for question. My humble submission is that if this gentleman had certain, you know what I mean, then why did you make him? Or did you make him after knowing all this and keeping this information in a pocket? कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, आगे कभी गड़बड़ करें? No, this is not playing fair. I now come to the judgment that has also been mentioned in great detail, but this judgment is very, very pointed. It says that he points out to the whatever I mentioned about the election commissioner being at the mercy of the CEC. It refers to various steps taken to amend the present electoral law, and then uses a word. It becomes the Supreme Court. It becomes imperative to shield the election commissioners and to insulate them from executive interference. A word like this being mentioned by the Supreme Court is indication enough that we should be more judicious with the post. We should be more judicious with the post. Now, coming to the 1991 Act that it seeks to replace, the 1991 Act actually gives them the status that this Act is taking away. So in a way, the 1991 Act was good enough. So the 1991 Act was concentrated mainly on salaries. This one does on the demeaning of status. So my humble submission to all the members. Let him complete. Sir, I need those extra seconds, sir. Am I only? Please pause it. Please pause it. Sir, let me carry on. And if it is Point of relevant order. or not, you can. Point of अगर order. आपके पास Please, कुछ है पहले please. बताना था, not when I'm debating. Just अब मैं point of कहूँ, order. sir, Point do of order. not destroy Mr. Jawahar all Sarkar, please institutions. point of order. Point of order. Then sir, pause कीजिए. Rule. रूल 240 उसवती महोदय, इन्होंने अमेंडमेंट जो सरकार ने मूव किया है, I think he has not gone through the amended I part am of the reading it bill. from that. Otherwise, you are I'm saying reading the from old that. thing. I'm वो reading उसी from पुरानी बात को रिपीट कर रहे हैं, Will. और जो amendment This is a मूव point हुआ of है, order, sir. उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है. अगर उसको पढ़ लेते तो उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती. सती मैं ये करो कि जो सरकार ने अमेंडमेंट मूव किया है, उसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं, और पुरानी बात को बोल रहे हो. Please. Sir, let me continue. Please. Has referred to Rule 240 while seeking the point of order. 240. What does it say? 240. 240. Yes, he mentioned about 240. He mentioned 240. What does it say? I quote, the chairman
after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition